Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video, we will be discussing important current affairs for 17th of December. The session will be quite interesting, so stay tuned with us till the end. In this video, students, we will be talking about Rajasthan Global Investment Summit. Then we will be talking about Uttar Pradesh. It became the first state to fully adopt GEM. What is this GEM? We will be discussing in this video. Then we will be talking about ISR 2025. Then we will be talking about Punjab state, what it has achieved, why this is in news recently. Then we will be talking about World Malaria Report and we will be talking about Desert Night Exercise. There are many more news apart from this that will be beneficial in your learning. So stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, I'll suggest you all to subscribe as this is a one-stop solution for current affairs. The content we provide on daily basis is top-notch and it will be very beneficial in your learning. We make sure to upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs video and topic wise are uploaded on regular basis that will help you in enhancing your preparation for the competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start students with national affairs. The first news that we are discussing is about Rajasthan Global Investment Summit. This summit was held from 9 to 11th of December. First thing to remember. Next thing remember, as the name suggests, it is an investment summit. So in this summit, we will be seeing a lot of investment in the state of Rajasthan, where investors will be coming from all across the world. And during this, Rajasthan government, they have recently signed a memorandum of understanding worth 35 lakh crore rupees that will boost the Rajasthan state, right? So this 35 lakh crore MOU was signed during what? During the Rajasthan Global Investment Summit. Then there is a theme for this summit that students, I want you all to remember. Theme being replete, responsible, ready. This is the theme here for the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Right? One more thing, remember, Ministry of New and Renewable Energy. Let me show you here. It is Ministry of New and Renewable Energy. They have recently approved for the development of a 2 gigawatt or 2000 megawatt solar power project in Rajasthan. Right? Take a note of this. Apart from this, Tata Power, they have also announced an investment of 1.2 lakh crore rupees in Rajasthan in various renewable energy related projects. If we talk about Rajasthan state, who is the Chief Minister of Rajasthan? Bhajan Lal Sharma. Right? What is the capital of Rajasthan? It is Jaipur. Right? Then if we talk about national parks in Rajasthan, Ranthambore National Park, Sariska National Park, they are all located in Rajasthan. Right? Take a note of this. Moving on. Next is Uttar Pradesh state. It became the first state to fully adopt GEM. What is GEM? Government e-marketplace, right? So which state became the first state to fully adopt the government e-marketplace? It is Uttar Pradesh. The aim here of the government of Uttar Pradesh is basically to achieve transparency and eliminate any unethical practices that is being going in the public procurement. Here, under this government e-marketplace, the state government is expected to save more than 2000 crore rupees annually through the procurement of various goods and services through this GEM portal. This GEM portal, basically you will be seeing under this GEM portal,
or we can say this government gem portal. First thing, remember, this is an online platform and it is for the procurement of various products and services. It was launched by the government of India in 2016, and if the name of ministry is asked that which ministry launched it, it was the Ministry of Commerce and Industry that launched this gem portal. And the aim of this portal or this gem government e-marketplace, as the name suggests, it is a marketplace that is online, right? This will make sure that it is transparent, efficient platform for the buyers and sellers also. Correct? Through this government marketplace, you will be seeing that there will be bidding of various services, products. There will be auctions of those products and services, and the government users thus will achieve the best value for their money for the product or the service respectively, right? Then there has been multiple initiatives that has been launched under the government e-marketplace, such as your startup runaway 2.0. This is an opportunity for the startups to showcase their innovative products and services to the government buyers and engage in public procurement and sell their products to the government buyers under 13 globally recognized startup subsectors. Then next is your gem, this government e-marketplace. It has also mandated the procurement goal of 25% from MSMEs, and we know that government of India is mandating and government of India is helping so that the MSME sector can grow in India. Next thing, remember, it is Womania. Third initiative is Womania. This Womania, the aim here is to showcase the products that are made by the women entrepreneurs, women self-help groups, right? So that these women entrepreneurs and self-help groups, they can get an audience and a motivation to sell their products. Fourth thing, remember, it is your Saras collection. The Saras collection, right? This Saras collection, it comprises of various handicraft, handloom textiles, office decor products, furnishing accessories, and many others, right? So these are some of the initiatives that has been launched under government e-marketplace portal. Moving on, next we are talking about ISR 2025. What is this ISR? India Skills Report. As the name suggests, skills, right? So this, we are talking about the skills of the educated youth in India, the graduated youth in India, right? So according to this ISR, India Skills Report, this was the 12th edition of this India Skills Report that was recently released, and this report stated that 54.81% of the Indian graduates are expected to be globally employable by 2025, and this number is an increase of almost 7% from last year, that is in 2024, that was 51.2%. Let me show you a better data here. 12th edition of this report of India Skills Report, and it stated that 54.81% of the Indian graduates are expected to be globally employable by 2025, an increase of from 51.2% in 2024. Maharashtra has topped in the India Skill Report for employability, followed by Delhi, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, UP, and so on. And this list is topped by Gujarat in men and Andhra Pradesh in women list. Correct? Take a note of this. Then this ISR 2025 report, published by whom? It was published by VBox, right? This is a talent assessment agency. VBox, along with AICTE, that is your All India Council for Technical Education, CII, that is your Confederation of Indian Industry, then AIU, that is your Association of Indian Universities. Correct? Moving on. Okay, we talked about Maharashtra, right? Who is the new Chief Minister of Maharashtra? Devendra Fadnavis. What is the capital? Mumbai. Who is the Governor of Maharashtra? CP Radhakrishnan. Next is top 5 states for employability. We saw Maharashtra top, second Delhi, Karnataka, Andhra Pradesh, and Kerala. So this question can definitely be asked that which is the state, right, according to ISR 2025, that is the top state in terms of employability. So it is Maharashtra. Next is, which state became the first state to enact Development and Promotion of Sports Act 2024? It is Punjab state. Now what is this? In the development and promotion of
Sports Act. So in simple terms, we say the aim here is basically to provide better infrastructure, to provide better services, to provide better tools, equipments to the sports students, right, who wants to take part in sports. Because we know, in order to be a participant, in order to be an athlete, the proper infrastructure should be there, right? Ground level work has to be done in order to provide the better infrastructure. Say for example, if any individuals wants to buy a or wants a training in javelin throw, right? We know Neeraj Chopra was a game changer for India, right? So if any person is inspired by Neeraj Chopra and he want to pursue his career in sports, and then he takes up javelin throw, then a proper ground should be there for javelin throw, proper trainers should be there, proper coaches should be there, right? Similarly for shooting, if any one person wants to take up shooting, then you should know that there should be a proper place, proper covered area where the shooting can take place and he can practice. If that is not there, then how an individual will be able to take part in this? Similar for swimming, right? If a person wants to become a swimmer, right, then he should have that accessibility, he should have that place where he can swim. There should be pool, there should be international standard stadiums, there should be international standard swimming pools that can he practice there, right? So similarly, to provide better infrastructure in sports, and in order to also promote transparency in the selection of player for those sports, this development and promotion of Sports Act 2024 was implemented. And which state became the first state to implement it? It is the Punjab states. Very important, right? Punjab's Chief Minister Bhagwant Singh Mann has given the approval to enact Punjab State Act 2024, that is the Development and Promotion of Sports Act 2024, that became the first state in India to promote the enhancement of sports infrastructure and transparency in the player selection. As per the national state policy, the initiative aims to establish a legal framework that will adopt national and international best practices to drive development of sports within the state. Correct? Take a note of this. For this development and promotion of Sports Act 2024, a 5-member committee will be established. A dispute resolution committee will be formed here, right? Apart from this, remember, if we talk about this national state policy, remember, Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, right, is framing this National Sports Policy 2024 that will promote excellence and development in India in terms of sports. Correct? Take a note of this. Next, okay, who is the Chief Minister of Punjab? Bhagwant Singh Mann, right? Next is international affairs. World Malaria Report was released. Malaria is a disease that is caused by the bite of a mosquito, right? Can you tell me the name of that mosquito? This is your homework, right? This is an easy question that you should know definitely. Coming back, this World Malaria Report released by which organization? It is World Health Organization that released this report, and it stated that global malaria cases are increasing. That means the number of cases of malaria are increasing. This report has stated that India has made various developments in combating the malaria, right? According to the report released by World Health Organization in 2023, that was your World Malaria Report. But because of various changes, we are seeing that the number of cases of malaria globally are rising. India had exhibited high burden to high impact group due to significant process, and WHO malaria reports revealed that in 2023 majority of malaria deaths occurred in 4 countries that include your Nigeria, Democratic Republic of Congo, Niger and Tanzania. As of November 2024, 44 countries and one territory that is Cabo Verde have been certified malaria free by WHO. And you should remember this question is definitely being asked multiple times also, that which country was declared malaria free in 2024? It is Cabo Verde. Apart from this, one country was also declared. Apart from Cabo Verde, one more country was declared malaria free. This is also your homework. So 2 homework questions from this news, that which country became malaria free in 2024, the status given by WHO, and second is your name of the mosquito who because of the bite of which causes malaria. Also tell me the name of the mosquito that causes dengue. Correct? Take a note of this. Moving on. Next, here you can see malaria free countries and we saw Cabo Verde. But one more country is there.
Next is we are talking about Desert Night 2024. So India, France and UAE, they have conducted a trilateral air exercise. Trilateral means three countries have taken part in this exercise, and this is an air exercise. That is, the navies of these countries took part in this exercise. What is the name of this exercise? It is Desert Night. And what is the location? It is above Arabian Sea. This exercise was conducted, and it was the second trilateral exercise of 2024, held from 11th to 13th of December. Right? From India, remember which aircraft took part in this exercise? It was Sukhoi 30, Mark 1 fighter jet and Jaguar. They both took part in this exercise from India. From France, it was Rafale and F-16 fighter jet that took part. Correct? So remember these. This is important. Question can ask that in 2024 Desert Night trilateral exercise was held. Name the aircraft that took part from the Indian Navy or Indian Air Force. So it is Sukhoi 30 and Jaguar. Next is banking and finance. SEBI mandated the mutual fund companies to process cancellations of SIP in 2 days. What is SIP? Systematic investment plan. That means you can opt for a plan where money will be directly deducting from your bank account and will be invested in mutual funds, in ETFs or your gold or your equities, right? So recently SEBI, they have stated that whenever an individual want to cancel their SIP process, then it should not take more than 2 days now. Earlier it was taking almost 10 days, right? 10 working days, but now this SIP cancellation will be carried out in just 2 working days, and the new timeline for the cancellation of SIP has come into effect from 1st of December 2024, right? That means earlier it almost used to take between 5 to 10 working days if you want to cancel your SIP, right? This systematic investment plan. But now SEBI has stated to all those mutual fund companies that now if any individual who is having a SIP in mutual fund and they want to cancel it, it should be done within just 2 days. Then apart from this SIP, there is also a term now is in the market, that is SWP. That is your systematic withdrawal plan, right? Do remember this also. All right, let's move on. Next is your LDV's mutual fund. They have launched the India's first ETF for capital markets and insurance sector. What is ETF? ETF is your exchange traded fund, right? So LDV's mutual fund, a leading asset management company, introduced the India's first ETF that is focused on the capital market and insurance sector. The NFO, that is your new fund offer, was open for subscription on 10th of December, and a minimum investment of 5,000 rupees will be here. From 10th of December to 24th of December, this NFO will be available. Moving on, next is economy and business. BMW Group and UNICEF, they have partnered to enhance the education in India, right? BMW, we all know the famous car brand BMW, right? And they have recently partnered with UNICEF so that they want to enhance the education sector in India. They want to make sure that almost 1 lakh children across 4 states, that is Assam, Jharkhand, Tamil Nadu and West Bengal, they get proper education. And with this education, because why education is important, right? Because with the education, the student or the children will be able to get better life. They will be able to have better job opportunities. They will have a different and good mindset that will help the society also to grow. So this program will be focusing on STEM, that is science, technology, engineering and mathematics, so that the students, the children from the early childhood only, they get attracted to the science form, right? In India, the focus will be on nurturing the foundational literacy and numeracy skills. Also, UNICEF will create specialized training programs for the teachers so that they can help those students get interested in the STEM, right? Next is CSC e-governance. They have signed a memorandum of understanding with CAIT to enroll traders and citizens in social security schemes. See, Common Service Center CSC, right? E-Governance Service Limited India. They are operating under MEITY and they signed this MOU with Confederation of All India Traders. That is a traders body based in New Delhi.
right? And they have recently signed a memorandum of understanding. Under this, the partnership aims to enroll the traders and citizens into various government social security schemes by organizing various dedicated camps. These social security schemes include your NPS, National Pension System, then Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, Atal Pension Yojana, PM Swan Nidhi Scheme, Digi Pay Sakhi Scheme, Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana, and many others. Next is awards and recognition. WTA awards. What are WTA? WTA is your Women Tennis Association. So WTA awards 2024 were held, and Arnya Sablanka has won the WTA Player of the Year 2024 for the first time. Arena Sablanka, she is from Belarus, right? She is currently world's #1 tennis player, right? And now she has been honored with the 2024 Women's Tennis Association Player of the Year Award for 2024. She has won 23 career titles, 17 in singles and 6 in doubles. Apart from this, there are some other awards also, such as your Player of the Year, Ariana Sablanka, Doubles Team of the Year, here you can see Most Improved Player of the Year, Newcomer of the Year, Comeback Player of the Year, but the important one is the Player of the Year, and these are for all the women's. Next is Time Magazine named US President-elect Donald Trump as the Person of the Year for 2024. Very important, students, right? Because now we know that he will be the president of USA, right? And from 10th of January, he will be starting his position. But before starting only, he had basically given out so many or we can say he has came out with so many new initiatives or new statements that he gave that have caused havoc all around the world. An interesting one is that he stated that now he wants that Canada to become the 51st state of USA, right? And he wants that President Justin Trudeau to become the governor for Canada. This is also an interesting news in itself, students, right? So because of his statement, we are seeing so many changes. The cryptocurrency in that Bitcoin has risen to 106, that is the all-time high, right? That is again a game changer inside, like $1 lakh, that is a huge amount, right? So coming back, Time Magazine, they have named whom as the Person of the Year for 2024. As you can see him in the picture, the President of America, the new President of America, Donald Trump. For Time Magazine, who is the Chief Executive Officer? Jessica Sibley, headquarter of which is in New York, USA, and it was created in 1923. Next, here you can see some others. Persons of the Year, Donald Trump. CEO of the Year for this time is Lisa Fang Su, the CEO and Chair of AMD. Athlete of the Year, Kathleen Clark of USA. Moving on, next is President of India, Draupadi Murmu ma'am, has been conferred the National Panchayat Awards to 45 exemplary panchayats and institutes. Take a note of this, that how many individuals or institutes or panchayats were awarded with the National Panchayat Award by the President of India, Draupadi Murmu ma'am. So 45 panchayats and institutes were awarded here. Take a note of this directly. And why so? Why these awards were given? These awards are given basically to, or these awards are given to acknowledge and incentivize the best performing panchayats across the country so that they perform better, right? The aim of these, or basically the fields in which these panchayats are working, such as your, to make sure that the people are free from poverty, right? Better healthy panchayats are there, child friendly panchayats are there, water sufficient panchayat, clean and green panchayat, self sufficient infrastructure should be there, and so on. Moving on, next is science and technology. Indian Army has received 80-15 drones from Asteria Aerospace. This Asteria Aerospace, this is Bengaluru, Karnataka based company, and they have delivered the largest ever batch of Armalite rifle, that is AT-15 VTOL, that is vertical takeoff and landing drones. These AT-15, these are the drones, right? These have been delivered to the Indian Army, right? This will enhance the capabilities of Indian Army. This will promote better defense capabilities, as well as this will promote Atmanirbhar Bharat initiative in India. Correct? Take a note of this. Apart from this AT-15 drones, they can operate at a height of 6,000 meters
right? And they can flight, they have a flight time of up to 2 hours, that is 120 minutes. Next is sports. Under 19 men's Asia Cup was held and Bangladesh has beaten India by 15 runs. I repeat, this was the second consecutive ACC win for Bangladesh. Correct? And Bangladesh defeated our country, India, in the finals. Where was the final held? The final was held in UAE. Right? And for this under 19 men Asia Cup, this was the 11th edition that was held from 29th of November to 8th of December. Right? In 2023 also Bangladesh won, and now in 2024 also Bangladesh has won. Here you can see some player of the tournament. Iqbal Hassan, player of the match Iqbal Hassan, most runs in the tournament Shahzeeb Khan, and most wickets in the tournament Iqbal Hassan. Next, Lando Norris has won the F1 Abu Dhabi Grand Prix as McLaren secures the constructors title. So who won the Abu Dhabi Grand Prix? It was won by Lando Norris. He is a British driver and he won the Abu Dhabi Grand Prix, right? Take a note of this. Apart from this, Lando Norris for McLaren first, Carlos Sainz of Ferrari second, Charles Leclerc third, Lewis Hamilton fourth, and George Russell on fifth position. Next, we are talking about books and authors. 3 books on Sitaram Yechury's writing on culture, media and secularism has been launched. Right? These are the 3 books that we are talking about. So, which are those books? First is Hindu Rashtra Hai Kya? Second, The Fight for Republic. And third, Reflections on Culture, Media and Science. These are the 3 books. I repeat, Hindu Rashtra Hai Kya? Second, The Fight for the Republic. And third, Reflections on Culture, Media and Science. Next, we are talking about state news. TCGL. What is TCGL? It is your Tourism Corporation of Gujarat Limited. I repeat, Tourism Corporation of Gujarat Limited. They have recently signed a memorandum of understanding with Bihar-based Bodhi Gaya Vidyalaya 980 Institute, right? And this MOU has been signed for the conservation of the Buddhist heritage sites in Gujarat. I repeat, TGCL, that is Tourism Corporation of Gujarat Limited, they signed this memorandum of understanding with Bodhi Gaya Vidyalaya 980 Institute, and it is for the conservation and promote the Buddhist heritage sites in state. This MOU has been signed for cooperation and conservation and the development of the Buddhist tangible as well as intangible heritage sites in Gujarat, right? This will promote their culture. Apart from this, the 4th edition of the Mekong Ganga Dham Yatra was held recently. This 4th Mekong Ganga Dhama Yatra began in Bangkok, Thailand, right? Take a note of this. I repeat, 4th edition of Mekong Ganga Dhama Yatra. Where did this 4th edition of the Mekong Ganga Dhama Yatra begin? It began in Bangkok, Thailand. Remember this question can be asked, right? Next is Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu has launched 6 new schemes. Which are these schemes? First is your Rajiv Gandhi National Farming Startup Scheme, right? To promote the farming startups. Second, Organic Compost Purchase Scheme. That means focus should be on promoting the organic farming, and for that purchase the organic compost. Third, e-taxi scheme. This e-taxi scheme is for the employment that will promote electricity, or this will promote your electric taxes, right? Also the subsidies will be provided by the government on the purchase of these e-taxis. Fourth, Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana. This will support the education for the children of widows, destitute women, divorced women and disabled parents. Fifth is HP Shiva. That is your HP Subtropical Horticulture, Irrigation and Value Addition Project. It is for growing fruits like oranges, guavas, lychees, etc. And sixth is your Mobile Ayush Healthcare Unit. This healthcare unit is basically to provide homeopathic treatments to other underserved regions of Himachal Pradesh, Chamba, Spiti, Laul Spiti, Kinnaur, etc. Right? So these are your 6 schemes that has been launched by the Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu. Next, right, here you can see the 3 schemes and the rest 3 we discussed.
Next, we are talking about Rajasthan state. They have celebrated Pravasi Rajasthani Divas on 10th of December every year, right? Now they have discussed that they have declared, right? The Chief Minister of Rajasthan, Bhajanlal Sharma, declared that Pravasi Rajasthani Divas will be celebrated every year on 10th of December to honor the contributions of the global Rajasthani community, right? This day will strengthen the bond between the expatriates and their homeland, right? Take a note of this, right? So students, that's all for the day. Now let's move to some revision part that will be very beneficial in your learning. Next, who was jointly awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2024 with American development biologist Victor Ambrose for the discovery of microRNA? So Gracie Bruce Rovkun, right? They both were awarded with Nobel Prize in Physiology or Medicine for 2024, and this is for the discovery of microRNA. Take a note of this. Next is who was jointly awarded the Nobel Prize in Physics 2024 with British Canadian computer scientist Geoffrey E. Hinton for foundational discoveries and invention that enable machine learning with artificial neural network. So John J. Hopfield along with Geoffrey E. Hinton, they both were awarded with the Nobel Prize in Physics by the Royal Swedish Academy of Science in Stockholm, Sweden. Here there was a prize, also remember, amount of 11 million Swedish kronor. Right? Next is who among the following were jointly awarded with the Nobel Prize in Chemistry. So all three of them, David Becker, Demis Hassabis and John Jumper, they all three of them were honored with the Nobel Prize in Chemistry. Next, Hong Kang from South Korea won the Nobel Prize in which category? So Hong Kang, he won the Nobel Prize in the field of literature, correct? And not he, she. Hong Kang is a woman and she became the first South Korean to win a Nobel Prize in literature and second Nobel laureate from South Korea. Moving on. One more thing, if I ask you who was the first person from India who was awarded with the Nobel Prize in literature? Rabindranath Tagore, right? And that too in 1913. Next, who is the only IPS officer selected for the 2024 IACP 40 under 40 award? So Preetpal Kaur, she is an IPS officer, right? And she's an IPS for the FAC district of Nagaland, and she is the only Indian selected for the 2024 IACP 40 under 40 award, right? And here remember, Preetpal is among the 40 police officers who have been selected from 16 countries around the world. Next, who has been recently honored with the Lifetime Achievement Award by the Asian Human Resource Development Academy? So Muthuval Karunanidhi Stalin, right? That is M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, right? He was honored with the Lifetime Achievement Award by the Asian Human Resource Development Academy. Next, which airport has recently won the Platinum Award under the Facility category at the Society of Energy Engineers and Managers Awards in New Delhi? So which is that airport? It is Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. This award, it highlights the airport's dedication towards creating a greener and more sustainable airport facility. Next, which country's non-governmental organization, that is NGO, was awarded with the Nobel Peace Prize 2024? It is Japan, right? Japan country's NGO was awarded with the Nobel Peace Prize. What is the name of that NGO? Nihon Hidankya, right? Next, which among the following is the winner of the Sverigis Riksbank Prize in Economic Sciences in the memory of Alfred Nobel? Remember, this award is also known as the Nobel Prize in the field of economics, right? Hence, it is known as Sverigis Riksbank Prize. So, who was awarded with this Nobel Prize in economics? All three of them: Darren S. Moglu, Simon Johnson, and James A. Robinson. They were awarded with this award. Next, who has been recently honored with the 2024 UN High Commissioner for Refugees Nansen Refugee
Award Global Laureate. So Sister Rosita Milesi, right? She's a Brazilian nun, 79 years of age, a lawyer, a social worker. She was honored with the UN HCR Nansen Refugee Awards for Global Laureate, and this is basically for her effort for providing the rights, dignity to the refugees and the migrants of different nationalities in Brazil. Next, who has recently been conferred with the 48th Vayalar Ramavarma Memorial Literary Award for his novel Kathu Kadavu. So, Ashokan Charulville. I repeat, Ashokan Charulville was conferred with the 40th Vayalar Ramavarma Memorial Literary Award. Next, which state has recently bagged the first prize in the category of Best State in the 5th National Water Awards? So, it is the state Odisha. Take a note of this. And Odisha won the first prize in the category of Best States here. Next, who became the second woman from India and the 10th Indian to be inducted into the ICC's Hall of Fame in October 2024. So, Neetu Lawrence David, correct? Along with the South Africa's legendary cricketer AB de Villiers and former cricket team captain Sir Alastair Cook were inducted into the ICC Hall of Fame for the class 2024. Alastair Cook at 113th position, Neetu David at 114th position, and AB de Villiers at the 115th position. Next, students, is our homework section. First, tell me recently, if I ask you, which is the country's first indigenous antibiotic? First indigenous antibiotic that has been developed by Wockhardt. What is the name of this first antibiotic? India's first antibiotic. Second, recently, how many years of Hornbill Festival was observed, or which anniversary of Hornbill Festival was observed, and where is this Hornbill Festival observed? Third question, recently Andhra Pradesh has partnered with which tech giant for harnessing the AI technology? So these are your 3 homework questions, students. If you find the session interesting, do hit the like button. Also, students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Now let's move to the Hindi segment of this video. Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video, we will be discussing important current affairs for 17th of December. The session will be quite interesting, so stay tuned with us till the end. In this video, students, we will be talking about Rajasthan Global Investment Summit. Then we will be talking about Uttar Pradesh. It became the first state to fully adopt GEM. What is this GEM? We will be discussing in this video. Then we will be talking about ISR 2025. Then we will be talking about Punjab state, what it has achieved, why this is in news recently. Then we will be talking about World Malaria Report, and we will be talking about Desert Night Exercise. There are many more news apart from this that will be beneficial in your learning. So stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, I'll suggest you all to subscribe, as this is a one-stop solution for current affairs. The content we provide on daily basis is top-notch and it will be very beneficial in your learning. We make sure to upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs video and topic wise are uploaded on regular basis that will help you in enhancing your preparation for the competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes.
A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टूडेंट्स, नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की. जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, तो यहाँ पे ग्लोबली इन्वेस्टर्स राजस्थान में इन्वेस्ट करेंगे ताकि राजस्थान को ग्रो कर सके. एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, आईसीटी, नए नए स्टार्टअप्स आएंगे. इवन यहाँ पे हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में. रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का काम किया जाएगा. राइट, तो देखें तो ये जो राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट थी 9 से 11 दिसंबर तक हुई थी. राइट, इसकी एक थीम भी आप याद रखिए. थीम थी रेप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी. एंड यहीं पे राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ये एमओयू साइन किए हैं ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट, तो 35 लाख करोड़ के यहाँ पे एमओयू साइन किए गए हैं. इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अप्रूव किया कि हम 2 गीगावाट का यहाँ पर एक सोलर पावर प्रोजेक्ट्स या फिर सोलर पार्क प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे राजस्थान में. एंड इवन टाटा पावर ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि 1.2 लाख करोड़ रुपीज हम इन्वेस्ट करेंगे राजस्थान में ताकि वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश यहाँ पर किया जा सके. राजस्थान की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? भजनलाल शर्मा. कैपिटल क्या है इसकी? जयपुर. और यहीं पे एक नेशनल पार्क भी याद रखेंगे, रणथंभौर नेशनल पार्क एंड सरिस्का नेशनल पार्क. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में. उत्तर प्रदेश पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने फुल्ली अडॉप्ट किया है जेम को. जेम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनसे इंस्पायर होके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो अपने प्रोडक्ट्स, हम जो अपनी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, उनका क्यों ना हम उनको खुद सेल करें. राइट, उनका ऑक्शंस कराया जा सके, उनकी बोली लगाई जा सके, जिससे क्या होगा? एक तो बेटर प्राइस मिलेगा, दूसरा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी. राइट, कि कोई भेदभाव ना हो रहा है या फिर कोई किसी को करप्शन ना देखने को मिले कि करप्शन के बेसिस पे कोई प्रोजेक्ट ले जाए. तो इन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है उनको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इस्टेब्लिश किया गया था. ये 9 अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा. राइट, एंड सेम चीज कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करा के एंड फेयर एंड कॉम्पिटिटिव मैनर में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आगे प्रोवाइड कराया जा सके. तो इसी के अंदर देखें तो उत्तर प्रदेश वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने फुल्ली अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को. एंड जेम की बात करें तो जेम के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे स्टार्टअप रनवे 2.0. ये प्रोवाइड कराता है स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी कि वो अपने स्टार्टिंग में, करेक्ट, उनको बेटर प्रोक्योरमेंट एंड सर्विस मिल सके गवर्नमेंट से. दूसरा, एमएसएमईज के लिए हेल्प की गई कि गवर्नमेंट ने मैंडेट किया कि जो भी प्रोक्योरमेंट होगा ना उसका 25% एमएसएमईज से आएगा, जिससे एमएसएमईज को ग्रो करने में हेल्प मिल सके. तीसरी चीज याद रखेंगे, वुमनिया. ये वुमनिया क्या है? कि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है एंड जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है, हम उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने में, उनकी सर्विसेज को सेल करने में हेल्प करें ताकि वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिले. चौथा याद रखेंगे, सरस कलेक्शन. द सरस कलेक्शन, ये बेसिकली क्या है? आपके हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडलूम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ऑफिस डेकोर प्रोडक्ट्स, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स. राइट, इन प्रोडक्ट्स को सेल करने की बात की गई जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे बनाते हैं. राइट, फिर इसी के अलावा पांचवी चीज यहां पे याद रखेंगे, आपका आ जाता है, नहीं, ये 4 ही चीज यहां पे याद रखिए. राइट, ये 4 इनिशिएटिव्स, करेक्ट. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं आईएसआर. आईएसआर क्या है? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट. तो ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट अभी रिलीज की गई, जिसका 12वां एडिशन अभी रिलीज किया गया है. इसमें बताया गया है कि जो इंडियन ग्रेजुएट्स अब जॉब मार्केट में आएंगे, उनका डाटा अगर हम देखें 2023 से और 2024 को कंपेयर करें तो हमें 7% का इंक्रीज देखने को मिलता है, कि 7% ज़्यादा यहाँ पर हमें इंडियन ग्रेजुएट्स देखने को मिलेंगे जो कि एम्प्लॉयबल हो जाएंगे 2025 में. करेक्ट, इसको 2025 कर लीजिए, 2024, क्योंकि 2024 तो अब खत्म हो गया. 2024 और 2025 का डाटा देखें तो 7% का इंक्रीज देखने को मिलेगा. राइट, और यहीं पे किसने टॉप किया है? महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप कर लिया है. राइट, लेकिन इसी के अलावा एक दो और चीज देखेंगे. महाराष्ट्र में कितने परसेंट? 84%. सेकंड पे आ जाते हैं दिल्ली, कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश एंड रिस्पेक्टिवली. राइट, इस लिस्ट में अगर हम बात करें मेंस की कैटेगरी में तो गुजरात ने टॉप किया, एंड वीमेन की कैटेगरी में यहाँ पे आंध्र प्रदेश का हमें टॉप होता हुआ देखने को मिलेगा.
ठीक है, मार्क करके चलेंगे, राइट। तो महाराष्ट्र ने यहां पे टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, राइट। आप यहां पे डाटा भी देख सकते हैं, महाराष्ट्र टॉप, सेकंड दिल्ली, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ आंध्र प्रदेश एंड फिफ्थ पे केरला आ जाता है। एक और चीज, ये जो आईएसआर है 2025 का, जिसका 12th एडिशन अभी रिलीज किया गया, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? वी बॉक्स, ये एक टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है। वी बॉक्स, AICTE, CII एंड AIU, जो कि है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड टैग्ड, इनके द्वारा मिलकर यहां पे इस आईएसआर को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024 को यहां पे अपनाया है, इनेक्ट करा है, तो वो बन गई है पंजाब स्टेट। अब देखो इसका मेन एम क्या है इस एक्ट का, कि स्पोर्ट्स में हमें जो सबसे बेटर चीज हो जाती है ना, एक वो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बच्चों के पास जो स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहते हैं, राइट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो उनको खेलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना बच्चों का स्पोर्ट्स में, वो भी फेयर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल का, राइट। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए, आपका फेयर सिलेक्शन को स्पोर्ट्स में, इवेंट्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर इस डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024 को अपनाया गया है। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत सिंह मान। आप यहां पर इनको पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। तो इनका एम क्या है? एनहेंसमेंट ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना प्लेयर सिलेक्शन में, ताकि वो आगे फर्दर इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ये सब आपका नेशनल स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, जहां पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की बात की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024 को। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हमने देखे भगवंत सिंह मान। कैपिटल क्या रहेगी? चंडीगढ़, राइट। और यहीं पे स्नेहवल एयरपोर्ट है और भटिंडा एयरपोर्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो स्टूडेंट्स। 2024 में मलेरिया फ्री कंट्रीज डिक्लेयर की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वो कौन सी कंट्रीज हैं? एक हैं, दो हैं, तीन हैं या नहीं है, कौन सी हैं? वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, राइट। इसमें से एक बता देता हूं मैं, या चलो नहीं बताता, आप अगर स्मार्ट हो तो समझ लेना, बट ये होमवर्क है तो मैं चाहता हूं आप कमेंट करके बताएं। कमिंग बैक, ये वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया, अभी 2024 में रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया इंडिया ने अचीव किया 69% ड्रॉप इन मलेरिया केसेस। लेकिन वहीं ना कहीं अगर हम ग्लोबल स्केल पे देखें, ये रिपोर्ट बताती है कि जो मलेरिया के केसेस हैं वो ग्लोबली इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं, राइट। 83 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड जो हमारा कंट्रोल था मलेरिया पे, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है ग्लोबली, लेकिन इंडिया में 69% हमें डिक्रीज होता हुआ दिखा है इन केसेस। 4 कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हमें 2023 में, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजर एंड टेंजानिया एंड कैबो वार्दे। एक आपको हिंट दे देता हूँ, ये आप पढ़ लेना, मैं बोलूँगा नहीं, बोलूँगा तो होमवर्क आपका हो जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताओ। फिर एक और होमवर्क लिख लो, मलेरिया एंड डेंगू ये कौन से मॉस्किटो के काटने से होते हैं, राइट। अलग अलग हैं, मलेरिया अलग, डेंगू अलग, तो कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, अभी एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई डेजर्ट नाइट के नाम से। ये इंडियन एयरफोर्स या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज थी, मतलब एयरफोर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। किन किन कंट्रीज ने? इंडियन ने, फ्रांस ने एंड यूएई का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। 11 से लेके 13 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज कराई गई थी एंड ये सेकंड ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी 2024 की। यहीं पे इंडियन एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किन्होंने पार्टिसिपेट किया? सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला अलॉन्ग विद जैगुआर। फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। यूएई से F-16 फाइटर जेट्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। सेबी के द्वारा भी मैंडेट किया गया कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, उनको जो इनकी एसआईपी प्रोसेस होती थी उसको 10 दिन से रिड्यूस करके 2 दिन करना होगा। अब देखो एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके हर महीने या फिर जो भी वीकली या फिर मंथली या फिर डेली बेसिस पे आप पैसा चाहते हैं कि आपके अकाउंट से कट के किसी म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, गोल्ड में या कहीं पे इन्वेस्ट हो जाए, तो उसको एसआईपी कहते हैं कि आप सिस्टमेटिकली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी का अपोजिट हो जाता है एसडब्ल्यूपी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया
पे बहुत सारे फिनटेक इन्फ्लुएंसर या फाइनेंस इन्फ्लुएंसर वो ये टर्म यूज़ करते हैं कि अपने पैसे को इतना कॉर्पस जमा करो और SWP आप कर लो, उससे आपका मज़ा ही मज़ा, बहुत महीने के महीने पैसा आता रहेगा और पैसा भी बढ़ता रहेगा। बट स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ मैं बताऊं, SWP इतना इजी चीज़ नहीं है। SWP अगर आप करते हैं तो आपका बहुत पैसा लॉस हो सकता है, राइट। तो इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, बट इन इन्फ्लुएंसर से ना थोड़ा सा आप कम इन्फ्लुएंस हुआ कीजिए। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की, हर इंडिविजुअल पर्सन की सिचुएशन अलग होती है, राइट। तो इनसे ऐसे इन्फ्लुएंस होने की भी जरूरत नहीं होती। बहुत सारी नेगेटिव्स भी होती हैं जो यहाँ पे बताई नहीं जाती इनके द्वारा। कमिंग बैक SIP पर आते हैं, तो SIP प्रोसेस को आप कैंसिल कर सकते हैं। पहले 10 बिजनेस डेज लग जाते थे इसको कैंसिल होने में। अब यहाँ पे सेबी के द्वारा बोला गया, और ये 1 दिसंबर से लागू हो गया है, राइट। और इनके द्वारा बोला गया कि SIP जो प्रोसेस है उसको अगर किसी को विड्रॉ करना है, वो बंद करना चाहता है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, उसको अब 2 बिजनेस डेज के अंदर उसको कैंसिल करना होगा, राइट। मान के चलिए SIP अच्छी चीज़ है, आप इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, करेक्ट। कमिंग बैक, तो सेबी ने मैंडेट किया म्यूचुअल फंड कंपनीज को कि कोई भी SIP अगर कैंसिल करना चाहता है तो 2 बिजनेस डेज के अंदर उनको कैंसिल करने की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर LDVs म्यूचुअल फंड। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड होगा। इसका जो न्यू फंड ऑफर है वो आपका 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है एंड आपके 24 दिसंबर तक ये रहेगा NFO। 5,000 रुपये का यहाँ पे मिनिमम इसका सब्सक्रिप्शन रहेगा इस अमाउंट का। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। BMW ग्रुप, काफ़ी फेमस BMW ग्रुप है, आप जानते हैं, काफ़ी महंगी अच्छी रिच गाड़ियाँ बनाते हैं, जैसे BMW, रॉल्स रॉयस, BMW मोटार्ड एंड ऑन, करेक्ट। कमिंग बैक, BMW ग्रुप इन्होंने भी यूनिसेफ के साथ पार्टनर किया ताकि इंडिया में एजुकेशन को बेटर किया जा सके। लोगों को जो उनकी शुरुआत से, मतलब ग्राउंड लेवल से ही बच्चों को स्टेम में एजुकेट करने की यहाँ पे बात की गई। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उनके न्यूमरेसी एंड फाउंडेशनल लिटरेसी के ऊपर बात की जाएगी। उनका सॉलिड नींव बनाई जाएगी बच्चों की एजुकेशन में, ताकि वो फर्दर अपनी स्टडी कैरी आउट कर सकें, फर्दर जॉब एम्प्लॉयबल हो सकें। उनके पास स्किल होंगी तो वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयबल हो जाएंगे, राइट। तो कमिंग बैक, यहाँ पे BMW ग्रुप एंड यूनिसेफ ने पार्टनर किया है कि इंडिया में 1 लाख बच्चों को अक्रॉस असम, झारखंड, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल हम उनके एजुकेशनल ट्रांसफॉर्म या फिर एजुकेशनल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने की बात करेंगे, सॉरी, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी CSC ई गवर्नेंस ने एक MOU साइन किया CAIT के साथ। CSC क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर एंड ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। इन्होंने MOU साइन किया कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ, ताकि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है ना उसमें ट्रेडर्स एंड सिटीजन्स को एनरोल किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन लाया जा सके। जो आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो क्या है? जैसे NPS नेशनल पेमेंट सिस्टम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम योजना, डिजी पे सखी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, राइट। एंड उनमें लोगों को एनरोल करने के लिए, ताकि उनके पैसे सेव हो सकें, इन्वेस्ट किया जा सके पैसे को, ये लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। वीमेन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे वीमेंस को सम्मानित किया गया है एंड यहाँ पे अरियाना सेबलंका, इन्होंने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 को जीत लिया। इनको ऑनर किया गया है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल से फॉर द फर्स्ट टाइम। अरियाना सेबलंका ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल से किनको सम्मानित किया गया? अरियाना सेबलंका, ये टेनिस से बिलोंग करती हैं, राइट। ये याद रखेंगे क्योंकि WTA क्या है? वीमेन टेनिस एसोसिएशन। यहाँ पर आप डबल टीम्स ऑफ द ईयर, मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, न्यू कमर ऑफ द ईयर, कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, टाइम मैगजीन ने अभी US के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। अब देखो क्यों? क्योंकि इनकी कई सारी स्टेटमेंट ऐसी आई हैं जिन्होंने पूरा मार्केट को हिला दिया है, गेम चेंज कर दिया, राइट। इनके आने से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आपके ऑल टाइम हाई पर है। देन हमने देखा इन्होंने कनाडा से पंगा लिया, उनको बोला कि आप हमारी 51st US स्टेट बन जाओ। जस्टिन ट्रूडो को इन्होंने बोला कि आप गवर्नर बन जाना वहाँ के, राइट। देन सीरिया में इनके खिलाफ चल रहा है तो इन्होंने बोला कि हम सीरिया में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट। देन चाइना को भी इन्होंने, चाइना के शी जिनपिंग को अपनी
ओथ सेरेमनी में बुलाया। इंडिया इनको इन्होंने ब्रिक्स को यहाँ पे धमकी दे डाली कि 100% टैरिफ लगा देंगे अगर अब ब्रिक्स ने अपनी करेंसी लॉन्च करी। तो इन सारी चीज़ों के बहुत स्ट्रांग इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड इसी के चलते कहीं ना कहीं इनको पर्सन ऑफ द ईयर का यहाँ पे टाइटल से सम्मानित किया गया बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में रहेगा एंड जेसिका सिबले ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टाइम मैगजीन की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टाइम मैगजीन विनर्स देख सकते हैं, पर्सन ऑफ द ईयर आ गए, सीईओ ऑफ द ईयर लीजा स्वांग फेंग सू ऑफ यूएसए एंड एथलीट ऑफ द ईयर कैटलिन क्लार्क। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने अभी नेशनल पंचायत अवार्ड्स दिए 45 एग्जाम्पलरी पंचायत एंड इंस्टीट्यूट्स को। ये अवार्ड दिया जाता है ताकि पंचायत अपने काम को अच्छे से करें। कौन सी पंचायत ने ज़्यादा अच्छे से इनिशिएटिव लिया किसी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, पावर्टी रिडक्शन के लिए, राइट। एंड इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किन पंचायत के द्वारा फॉलो किया गया, राइट। उन पंचायत में क्या एजुकेशन के ऊपर काम किया, क्या वहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, क्या वो पंचायत वीमेन फ्रेंडली है, चिल्ड्रन फ्रेंडली है या नहीं, क्या वहाँ पे सोशली जस्टिस मिलता है या नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे 45 पंचायत को एंड इंस्टीट्यूट्स को सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। इंडियन आर्मी ने भी रिसीव किए AT-15 ड्रोन्स को। ये एस्टेरिया एरोस्पेस जो कि बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है, इनके द्वारा बनाए गए एंड AT-15 अर्मा लाइट राइफल, राइट, अर्मा लाइट राइफल ड्रोन्स रहेंगे। ये VTOL ड्रोन है जो कि है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन। इंडियन आर्मी को ये मिले हैं एंड इंडियन आर्मी की डिफेंस सेक्टर को ये काफ़ी बूस्ट मिलेगा इससे, एज वेल एज क्योंकि बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड एस्टेरिया कंपनी के द्वारा इनको डेवलप किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भी कहीं ना कहीं बूस्ट देता हुआ देखता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। अंडर 19 मेंस एशिया कप की हम बात कर रहे हैं। ये अंडर 19 मेंस एशिया कप का रिसेंटली याद रखेंगे 11th एडिशन था जो भी हमें देखने को मिला। इसका फाइनल इवेंट हुआ था UAE में एंड इस बार किन्होंने जीत लिया है, बांग्लादेश ने इंडिया को फाइनल्स में हराकर मेंस एशिया कप के वापस से अंडर 19 मेंस एशिया कप टाइटल जीत लिया है। वापस से क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इन्होंने 2023 में भी जीता था और अब 2024 में भी, मतलब सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पे इस टाइटल को जीत लिया है। यहीं पे आप कुछ देख सकते हैं विनर्स, जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इकबाल हसन, प्लेयर ऑफ द मंथ इकबाल हसन, मोस्ट रन्स इन द टूर्नामेंट शहजाब खान, देन मोस्ट विकेट्स इन द टूर्नामेंट इकबाल हसन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लैंडो नॉरिस। इन्होंने अभी रिसेंटली आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। लैंडो नॉरिस किसके लिए ड्राइव करते हैं, मैकलेरन के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड कार्लोस सेंस जो कि फरारी के लिए, थर्ड पर चार्ल्स लेसलर फरारी के, लुइस हैमिल्टन फोर्थ पर एंड जॉर्ज रसल फिफ्थ पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे स्टूडेंट्स। 3 बुक्स की हम बात करेंगे जो कि सीताराम येचूरी की राइटिंग्स पे हैं ऑन कल्चर, मीडिया एंड सेकुलरिज्म। इनको लॉन्च किया गया। इन बुक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक बुक है आपकी, याद रखेंगे, मैं आपको नाम बता देता हूँ, हिंदू राष्ट्र है क्या, सेकेंड द फाइट फॉर रिपब्लिक एंड तीसरा है रिफ्लेक्शंस ऑन कल्चर, मीडिया एंड साइंस। तो ये 3 बुक्स अभी यहाँ पे लॉन्च की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज पर। TCGL क्या है, टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड, राइट। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया बोधि गया विद्यालय 980 इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि जो बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स हैं, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, टेंजिबल क्या होता है जिनको आप टच कर सकते हैं, राइट, जैसे आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए एंड हेरिटेज साइट्स हो गई। इनटेंजिबल क्या हो गया, आपका कल्चर, आपकी लर्निंग्स, आपका ट्रेडिशन, राइट, जिसको आप टच नहीं कर सकते, बस आप उसको महसूस कर सकते हैं, राइट। तो बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज साइट्स को, कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को यहाँ पे कंजर्व करा जा सके एंड उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पे TGCL ने आपका बोधि गया विद्यालय 980 इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पे MOU साइन करा। एक और चीज याद रखेंगे, मैं बात कर रहा हूं 4th एडिशन ऑफ मैकोंग गंगा धामा यात्रा की। ये 4th एडिशन ऑफ मैकोंग गंगा धामा यात्रा कहां से शुरू हुई थी, ये आपकी बैंकॉक थाईलैंड से शुरू हुई है। इस यात्रा का मेन एम क्या है, जो बुद्धिस्ट की टीचिंग्स हैं, राइट, जो आपके एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए, पीस को प्रमोट करने के लिए, उसकी ये एक आपका यात्रा रहेगी जो कि बैंकॉक थाईलैंड से स्टार्ट हुई है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा 6 नई स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। कौन कौन सी 6 स्कीम्स हैं? पहली है राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। दूसरी आ जाती है ऑर्गेनिक
कंपोस्ट परचेज स्कीम की ऑर्गेनिक खाद को यहाँ पे परचेज किया जाए, ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट को यहाँ पे परचेज किया जाए। तीसरी आ जाती है ई टैक्सी, इलेक्ट्रिक टैक्सीज को प्रमोट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक टैक्सीज आए। इवन सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी देने की यहाँ पे बात की गई है। चौथा आ जाता है आपका इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन बच्चों की जो कि विडोज के बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट वीमेन, डाइवोर्स्ड वीमेन या डिसेबल पेरेंट्स हैं उनको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई। पांचवा आ जाता है हॉर्टिकल्चर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, जैसे आपके फ्रूट्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, उनकी ग्रोइंग को प्रमोट करने के लिए लॉन्च की गई। और छठी आ जाती है आयुष हेल्थ केयर यूनिट्स, जहां पर आपके आयुर्वेदा होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। तो ये 6 स्कीम्स यहाँ पर आपके लॉन्च की गई हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। तो दोस्तों इसके अलावा एक और चीज याद रखेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान ने अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया प्रवासी राजस्थानी दिवस, जो कि हर साल 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा। इसका एम क्या है, राजस्थान में जो कल्चर है, राइट, राजस्थान में जो आपका ग्लोबल कंट्रीब्यूशन रहता है राजस्थानियों का ग्लोबली, उन राजस्थानी कम्युनिटी का ग्लोबली, उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है, राइट। तो 10 दिसंबर को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। एक बार फिर देख लो, ये कंफ्यूज ना हो। नेचुरल फार्मिंग स्कीम, ये आपकी जो 6 स्कीम लॉन्च की गई हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, इलेक्ट्रिक टैक्सी, इसके अलावा क्या थी, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना एंड हॉर्टिकल्चर इरिगेशन वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, जिसको HP शिवा का नाम भी दिया गया। और छठी है मोबाइल आयुष हेल्थ केयर यूनिट्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, किस वेटरन एक्टर को भी ऑनर किया गया 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी? तो कौन है वो है मिथुन चक्रवर्ती, जिनको हम मिथुन दा के नाम से भी जानते हैं। ये 54th रेसिपिएंट बनेंगे इस अवार्ड के एंड 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान इनको सम्मानित यहाँ पे किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी इनको ऑनर करने के लिए। एंड 2024 में ही मिथुन चक्रवर्ती को, याद रखेंगे, पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको भी जॉइंटली अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से इन 2024 फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए भी किनको यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी से सम्मानित किया गया था, वो है गैरी ब्रूस रोवकुन को। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अलॉन्ग विद जॉफ्री ई हिंटन, राइट, एंड दिस इज फॉर द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन कि मशीन लर्निंग को हम कैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ कंबाइन करके उनको यूज कर सकते हैं। तो कौन रहेंगे, वो है जॉन जे हॉपफील्ड अलॉन्ग विद जॉफ्री ई हिंटन। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नेक्स्ट, इनमें से किनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया, तो तीनों को, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर, इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉन कैंग, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला किस कैटेगरी में, तो लिटरेचर की फील्ड में इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। एंड ये पहली वीमेन बनी है साउथ कोरिया से जिनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से। एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ऑल्सो द फर्स्ट एशियन, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। एंड 1930 में इनको भी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर यहाँ पे सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, वो कौन सी इकलौती IPS ऑफिसर हैं जिनको सेलेक्ट किया गया 2024 के IACP 40 अवार्ड के लिए? ये अवार्ड दिया जाता है पुलिस की ब्रेवरी एंड कमिटमेंट एंड अच्छे से काम करने के लिए। एंड कौन है वो IPS ऑफिसर, वो है प्रीतपाल कौर। ये इकलौती इंडियन है इन 40 की लिस्ट में जो कि 6 कंट्री से अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे सेलेक्ट की गई एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकेडमी? वो है मुथुवल करुणानिधि स्टैलिन, जो कि हैं MK स्टैलिन। ये चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, तमिलनाडु के। एंड इनको अभी सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बाय एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड इनके जो कमिटमेंट है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एयरपोर्ट को अभी प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर सोसाइटी फॉर एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स अवार्ड के लिए? करेक्ट, तो किनको सम्मानित किया गया यहाँ पे, वो कौन सा एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद गुजरात में रहेगा।
राइट। चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री के एनजीओ को अभी रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया 2024 के? तो वो है जापान का एनजीओ। क्या नाम रहेगा एनजीओ का? निहोन हिदानक्यो, राइट। एंड इनका जो एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स थे, ये उनका एक बेसिकली उन लोगों के द्वारा ये ग्रास रूट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कि हमें पीस को प्रमोट करना है एंड न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए, और इसी के लिए इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द स्वर्गीज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल? इसी को हम नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये है डेरेन ए स्मुगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इन द फील्ड या फिर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, जिसको हम स्वेगीज रिस्क बैंक प्राइज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किन को अभी ऑनर किया गया 2024 के यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉरेट से? तो वो कौन है? वो है सिस्टर रोजिता मिलेसी। ये 79 एज की हैं, ब्राज़ीलियन नन है, लॉयर है एंड सोशल वर्कर है। एंड इनकी जो काम है जैसे राइट्स, डिग्निटी ऑफ रिफ्यूजीज़, राइट, जो माइग्रेंट्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड कराना, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है कि जो माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज़ हैं डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के ब्राज़ील में, उनको उनके राइट तक, उनको उनका राइट दिलाना, राइट, उनके जो भी चीज़ों से उनकी एक लाइफ अपलिफ्ट हो सकती है, उसके लिए उनको राइट तक उनका काम कराने के लिए इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा, और इसीलिए इनको नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द 48th वयालर रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड फॉर द नॉवल कटू कडावू? तो किनको सम्मानित किया गया? वो है अशोकन चारुवेल। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली बैग किया फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी फॉर द बेस्ट स्टेट इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स? तो 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में किसने टॉप किया? वो है ओडिशा ने। नेक्स्ट, who became the second woman from India and 10th Indian to be inducted into the ICC's Hall of Fame in October 2024? तो सेकेंड वीमेन इंडिया से एंड 10th इंडियन ये बनी। ये कौन है? ये रहेंगी नीतू डेविड, राइट। अभी 3 इंडक्ट किए गए हैं आईसीसी की हॉल ऑफ फेम क्लास 2024 के लिए। वो हैं आपके एलिस्टेयर कुक 113th पोजीशन पे, नीतू डेविड 114th पोजीशन पे एंड एबीडी विलर्स आपके 115th पोजीशन पे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पे। पहला बताओ, रिसेंटली अभी किन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक प्रपोल्शन सिस्टम फॉर इंडियन नेवी लाने की बात की गई? इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया? मतलब इंडिया और किस कंट्री ने साइन किया एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रिक प्रपोल्शन सिस्टम फॉर इंडियन नेवी? दूसरा, अभी रिसेंटली मिशन हिमवीर ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया और किस लिए लॉन्च किया गया था? तीसरा, अभी रिसेंटली 57th टाइगर रिजर्व कौन सा बना है हमारी कंट्री का, वो बताओ, राइट। तो ये हमारे 3 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स एंड उन सबको बताओ अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म।